Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Hello everyone, welcome to the Generation Gap podcast. I'm Taimuddin, that's Daniel Ahmed, and today we'll be talking about the first test match, recently concluded test match between Australia and India. But first, a little from our sponsor. This program is brought to you by Magic Finger Spinning Lotion. If you want motion, try finger spinning lotion. So, coming to the first test match, क्या आपके ख्यालात हैं इस पे? How did the test match go, or did it go exactly as we expected? Because मैं तो आपको याद होगा सीरीज स्टार्ट होने से पहले कहा था कि मुझे लगता नहीं ऑस्ट्रेलिया को चांस है. इतने बुरे तरीके से वो हारेंगे ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि विद इन लाइक 2.5 days मैच खत्म हो जाएगा. But certainly I did expect कि काफी उनके साथ गंदी होने वाली है. Yeah, I mean, in a way, like when the third day happened, I was like, why did I expect any different result from this team? Like, मैं क्यों इतना optimistic हो रहा था कि fight देंगे like by the end. So like, I think when I watched them play, when I watched Australia play and I saw them struggling, I'm like, how is this coming off as a surprise to me? Like, of course, this was gonna happen to them. So again, it was fun to see regardless. So like, उतने अरसे से बाकी टीमों की अपने होम कंडीशन में मारने में लगे हुए थे. We didn't really expect Australia के साथ भी ऐसा ही होगा. I mean, to some extent, maybe there was a level of optimism. Obviously, Australia had been so dominant with other teams, but again, हम भूल रहे थे कि वो home conditions की बात है. और maybe शायद ये दिमाग में था कि जडेजा इतने अरसे के बाद खेल रहा है, so maybe he might not be at his best, perhaps. Might take him a little while to get back into the flow of things, but I mean, didn't seem like the guy Mr. Beat, to be honest. Throughout no. He was not fit to play. वो जो लोशन था ना उसकी वजह से स्पिन हुई थी बॉल. उसका तो काम, उसकी तो उंगली काम ही नहीं कर रही थी. का हो गया है जडेजा. वो कब से, मतलब पिछले कितने 20 साल से वो अपनी उंगलियों पे लोशन लगा के जो है वो बिल्कुल शाइनी फिंगर है उसकी, इंतहाई शाइनी. हाँ, कार्टल्स के साथ जो घर पे उसने रखा हुआ है वो पूरा टब में भर के रखा है. टब में उसको आते हुए उंगली डाल के ना उसके बाद वो घर भूल गया था उस दिन. उसने कहा ठीक है यार वो ले आना. लेकिन आई वुड से कि बड़े सरप्टिशियसली उसने वो लोशन मला था अपनी उंगलियों पे. ही डिडंट नीड टू डू दैट नेसेसरली. सामने कर ले ये. लेकिन मुझे वो पुरानी अफरीदी की हरकत याद है कि जब अफरीदी भाई ने ना वो क्रिकेट बॉल को सेफ समझ के चक्की काट रही थी उसको. नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि लाइक, मतलब आई थिंक आई गेट फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, ही इज लाइक लोशन ही तो है, लाइक मैं लगा लूंगा क्या हो जाएगा. लाइक आई थिंक वो ज्यादा मीडिया हाइप है कि लाइक वो एम्पायर के सामने क्यों नहीं किया. एंड लाइक आई थिंक इन लाइक व्हेन यू आर इन लाइक दिस एज ऑफ कैमरास, आई डोंट थिंक वो एरा रहा है कि आपको हर चीज एम्पायर के सामने करनी होती है, बिकॉज टीवी एम्पायर बता देगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो. दैट्स द थिंग. आई फील लाइक इट्स अ लिटिल ओवरब्लोन बाय द मीडिया. हाँ, although आज क्या उसकी खबर आई थी, there was something about a charge on him against 15% फाइन लगा. या फाइन तो लगा ना उस पे. हाँ, there is a fine on him, but I think उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. The thing out of the ordinary. बात वो ये कि इंडिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया वही बात है ना, 2.5 दिन में नहीं हारता, क्या 3 दिन में हार जाता. इतना ही फर्क पड़ना था उससे. नहीं, आई मीन जो 15% जो उसके पैसे गए हैं वो उसको मैन ऑफ द मैच की जगह से मिल गए. ये साथ नहीं आता, काम पूरा हो. लेकिन हाँ, आई थिंक ओवरऑल टेस्ट मैच में सबसे बड़ी सरप्राइज मेरे लिए ये था कि इंडिया जो है वो उतने आराम से जीत गया. ऑस्ट्रेलिया didn't really put up much of a fight, although this does happen a lot. Like I remember, क्योंकि हमें पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉशेस का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो यूजुअली यही होता है कि पहले टेस्ट मैच में टीम कुत्तों की तरह हारती है, और सेकंड टेस्ट मैच में once they've gotten a little used to the conditions, they tend to put up a better fight. So I think उसमें हमें अंदाजा होगा more so in the second test match पे ऑस्ट्रेलिया में कितनी जान है, because now they've seen the conditions a bit more, they're used to it. उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा होना शुरू हो गया कि अच्छा यहाँ पे किस तरह से हमने करना है. So I don't expect कि सेकंड टेस्ट मैच जीतेंगे, लेकिन I don't think इस तरह से इतनी बुरी तरीके से हारेंगे. चले 2 दिन में नहीं, चले शायद 4 दिन में हार जाएंगे शायद. ये चले मैं कह देता हूँ कि शायद अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया वाले हार जाए, but they will put up a much better fight, I feel like, in the second test match. But I don't really expect, मेरा तो 3-0 वाला जो था might have to revise it to 4-0. But I expect them to at least lose at least 3 test matches. लग मुझे यही रहा है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वही बात है कि at this point
India के players हम discuss भी कर रहे थे. I think you were talking about Ashwin's average. Like abroad, his average is pretty decent, around 30, but his home average is 20, right? 20 के average से बंदा bowling कर रहा है. I think same for maybe even better for Jadeja, right? क्योंकि Jadeja की overall average 24 है. So I think his home average must be below 20. The thing with Ashwin is that he's very arrogant about his ability in home conditions. So when जब वो border Gavaskar हो रही थी in Australia, तो उसके ऊपर जो documentary बनी थी, so he kept talking about कि like अगर Steve Smith अगर इंडिया में होगा तो he won't survive my bowling. And he kept saying, वो जो उसने Tim Payne को बात की थी कि that would be your last test match. And this is true. You cannot play Ashwin in India. That's just how it is. He's really good. So yeah. He knows he's good. और उसे पता है, मतलब वो ये है ना कि घोल के पी गया वाली बात. Yeah. He knows the conditions inside and out. He knows that no one else knows them as well as him. Yeah. तो उस तरह फायदा वहां से उठा सके. And the kind of control he has of his own bowling, but also on the pitches as well, in the sense कि मतलब उसे पता है कि जी pitch भी हम अपने हिसाब से बना सकते हैं कि अगर spinning track, तो फिर तो मुझे पता है it's almost like it's like a royal flush. Yeah. वाली बात है कि पता है you have those cards, आपको पता है just have to lay them down. There's no way anyone's going to beat me, right? Yeah. So वही बात है, barring any injury, I don't think there's anything you can do. अगर अश्विन की वहाँ पे bowling करे, and it is in some ways a shame. Like I remember someone was talking about that. Maybe शायद उस्मान समीउद्दीन बात कर रहा था कि we won't probably see Yunus Khan ever playing Ashwin in a test match, because that would have been an amazing contest. क्योंकि he is probably the best player of spin that I've seen. क्योंकि वो तो मतलब उसने he played against like उस जमाने के जो best bowlers थे अनिल कुंबले वगैरह, उनको, and he played them with a lot of ease, to be honest. बड़े आराम से उसने स्पिनिंग ट्रैक से ऊपर उनको खेल दिया था. It would have been a great contest to see कि वो किस तरह से उसको negotiate करता, या even someone like, चले इंजी तो एक पुरानी जनरेशन का था, लेकिन someone like Misbah as well. Misbah would also be a really good player of spin as well. Misbah खेल लेता बहुत अच्छा. I think Misbah का वो जो एक famous shot है ना, जो वो reverse वो sweep पे जा रहा है फिर last minute पे change कर दिया. तो अगर आपके उस level के reflexes हैं तो I think आप अश्विन को खेल सकते हैं बहुत आराम से. And कोई बात है कि that would have been a great contest to see, because obviously Ashwin in Indian conditions would be a different beast altogether. Yeah. But these have gone, some of them have gone to India, and at least Yunus did, and he performed really well. And that would have been an amazing contest to see, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में उस तरह का कोई, I think वही बात है, बेस्ट पॉसिबल उनके जो प्लेयर्स ऑफ स्पिन है, स्टीव स्मिथ है और क्या नाम है अपना, ख्वाजा है, लेबुशेन भी है at that level. Labuschagne ने 47 बनाए. That was the high score anyone in Australia made in that match. He was the one to get the highest score. That was maybe not sure be that surprising for me. मुझे लगा था कि Labuschagne का चले, वैसे तो he's performing well, लेकिन शायद maybe India उतना ना चले. So far he's the one who's the best. मेरे दिमाग में I think we were mentioning Khwaja and Smith to probably two main players. Labuschagne maybe as a support, but he's actually done well so far. देखते हैं आगे as we go along in the tournament तो किस तरह से perform करता है. But I think जो बात हम कर रहे थे, we were talking about Jadeja and we were talking about Ashwin. So I think एक बात ये हमारी हो रही थी कि the kind of एक तो all-rounders, obviously there's so few all-rounders in Test cricket anyway, and India has kind of been blessed with these two sort of elite level all-rounders at the same time in their team. So we know how difficult it was for South Africa to replace someone like Alice. So India will have to replace both of these guys. I don't know if they ever will be able to. So right now, तो चलें पिछले almost 10 सालों से उन्होंने sort of एक burden उठाया हुआ Indian Test team का. Both of them are in their mid-30s. I guess they'll be retiring or they'll be gone soon, the next 3 years or so. So वही बात है कि that will be probably one of the most difficult things for the Indian team to do once these players are gone. I think that would be a very difficult thing, because वही बात है, आपको बैटिंग में भी रिप्लेस करना पड़ेगा, आपको बॉलिंग में भी रिप्लेस करना पड़ेगा और दो बंदों को रिप्लेस करना पड़ेगा. It's hard enough to replace even one player of that caliber. तो कुलदीप यादव वेटिंग पे है. बॉलिंग में हो जाएगा. बॉलिंग हो जाएगी. मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज वही बात है, आप बॉलर डालेंगे तो फिर आपको बैट्समैन की जरूरत पड़ेगी, बैट्समैन डालेंगे तो बॉलर की जरूरत पड़ेगी. दैट्स वेयर द ऑलराउंडर्स एक्चुअली प्ले अ ह्यूज रोल, कि आपके पास दोनों चीजें आप सिक्योर कर लेते हैं, एंड यू कैन हैव अ डीपर बैटिंग लाइनअप ओवरऑल. आई थिंक वो चीज
थोड़ा काफी मुश्किल होगा once these two players are out, but I think right now कोई बात है कि in Indian conditions facing both of them is like one of the most difficult things you can do, considering the kind of performance they have. And I think हम ये बात कर रहे थे कि their record is kind of remarkable in the sense कि वो बात है कि with जो हम बात कर रहे थे 30 की average, I think you were talking about this, कि with most spinners even having an average of 30 is actually pretty good. That's an level पे हम 30 average को भी importance नहीं देते, हमें लगता है 22, 21, 25 तक चले आपकी हो जाए, that's a great player, but spinner के लिए like 30 की average is pretty good, and these guys are averaging around like mid-20s or something. With it, right? So they are quite remarkable in that sense. क्योंकि वही बात है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के जितने भी फॉर एग्जांपल एलीट लेवल के आपके लेग स्पिनर्स थे, all of them average 30. आपका मुश्ताक अहमद, यासिर शाह, Abdul Qadir, they all average around, right? Yeah, Danish as well, also above 30. So these guys are like genuine world class leg spinners थे अपने टाइम पे. वही बात है कि बहुत रेयर चीज है इस तरह के players का आपकी टीम में होना, and obviously there was not much of a chance that Australia had in conditions के खेलते हुए. लेकिन at the same time I think coming first at least इंडिया की जो innings थी, they did have some trouble, like start उनका अच्छा नहीं था, and I think in that sense I remember कि जब हमने शुरू किया था तो you did say कि रोहित शर्मा से कोई उम्मीद नहीं थी, मर्जी से खेलेगा. वो उसने मर्जी से ही खेला, because even when wickets were falling around him he didn't seem to be bothered all that much. वो लगता है किसी और पिच पे खेल रहा है. Yeah, he was on a different pitch altogether. Yeah. Well, I think the thing with Rohit is that, like, we can make fun of him. I think he's at the tail end of his career. I think 1-2 साल ज़्यादा ही नहीं खेलेगा. ये वर्ल्ड कप ही आखिरी होगा इसका. But at the end of the day, we forget that Rohit Sharma is someone who, since his teenage, was expected to be someone who's very naturally talented. Like, he has that natural talent to him. And eventually, I think with great players, you see that from time to time, even when they are. I still think Rohit Sharma is at the tail end of his career, but you saw in that, like, just previous brilliance. Obviously, I mean, that's just a definitive thing. Because जो age हो गई, अब ज़्यादा लंबा सा तो नहीं खेलेगा. That's a fact. Only going to play another maybe 3 years maximum. और अब उस level की consistency भी उसकी performances में नहीं रही, but he is going to be, I think वही बात है, अपनी terms पे probably वो छोड़ के जाएगा. And वही बात है कि it kind of shows you his level of skill once he wants to. I remember there was an interview उसका कोहली जो उसके बारे में कर रहा था, because Kohli was quite like kind of jealous of his ability. Like वो कहता है, मतलब he mentioned कि यार लोग जिक्र करते थे कि अच्छा यार ये बंदा, इसको बैटिंग आती है. वो कहते हैं you know he was like kind of arrogant in the sense कि यार कितनी अच्छी आती होगी. When I saw him bat, he said कि यार this guy is better than me. So you know, talking about him, like in terms of pure skill, yes, obviously I think there are very few players who can bat like him. और वही बात है कि when players like these actually are on form, तो फिर कोई चीज मैटर नहीं करती, फिर बॉलिंग मैटर नहीं करती, पिच मैटर नहीं करती. They'll just play the way they were. सब लारा हुआ करता था. Brian Lara was a bit like that as well. He wasn't probably as consistent as Tendulkar, but when he was on form, तो उसकी जो highest थे, they were even higher than I would say Tendulkar's, because he could do some things that just didn't seem possible. Yeah. कि मतलब एक spinning track होगा, ball foot फिर रही है, वो निकल के मार रहा होगा spinners को. Yeah, it's just not good. He's just going to do what he wants to do. मेरा दिल है मैं leg पे छक्का मारूंगा. To this day, when he played against Rashid Khan was bowling him on off stump, like good length pe, and he was just smashing it to like force, like cut करके. Like Lara had that ability कि वो like वो वही बात करते हैं कि वो अच्छी बॉलें अपनी मर्जी से मारता था, because he had that command to him. I remember जब Lara मतलब अपनी prime form में था, like early 90s Lara, he was a different beast altogether. I remember उस जमाने के मतलब early 90s के वसीम और वकार were remarkable bowlers. Like वो अपनी उनकी peak थी, swing में, seam में. Early 90s वकार was, जिसमें मैंने बहुत बार mention किया है कि force of nature type bowler था, और ये उनको कुट रहा होता था. मतलब it didn't matter कि यार ये लोग फुट बॉल स्विंग कर रहे हैं हवा में 90 miles per hour पे, it didn't matter to him. He kept hitting these guys as well. Like उसको ये भी कुछ नहीं कर पाते, ये भी कुछ नहीं पढ़ पाते. जब ये अपने फॉर्म में होता था, like उसका जो एक वो जोन थी ना, that was probably the most superior batting zone that I've seen of any player.
ये था मे बी शायद विव रिचर्ड्स उस तरह का था, who could do the same thing. But yeah, I mean, he was a different beast altogether. I think in some ways, Rohit Sharma is a bit like that as well. Like a bit inconsistent. जब अपनी फॉर्म पे होता है तो फिर it doesn't really matter to him कि बंदा क्या कर रहा है, पिच कैसी है, टर्न हो रहा है नहीं हो रहा. उसने कहा ठीक है, मैंने एग्रेसिवली खेलना है, वो एग्रेसिवली खेलेगा और रन भी मारेगा. And that's exactly what he did. And again, उसमें I think who else scored? I think Akshay Patel made a few runs. Jadeja played well, batting wise. Batting wise again, yeah. We forget how good he is. Like वो बात कहते हैं कि elite level का he's a player. Jadeja is kind of like at the Imran Khan phase of his career, where उसकी जो overall career average है वो बढ़ नहीं रही, but since the past 5 years he's been averaging like above 50 in Test batting wise. So if you watch like his cricket, almost every single match he is the clutch player. Like you know कि Jadeja खेलेगा, वो runs बना देगा. So yeah. And especially for him to come back after so long and then to immediately deliver, that's quite amazing. कि कोई मतलब लगा नहीं था कि उसको कोई मसला था फिटनेस का या ऐसी कुछ चीज. So but again I think उसमें second innings में I was surprised कि कितनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया की टीम collapse कर गई. You think कि चलो ठीक है first innings के बाद वो थोड़ा सा समझेंगे, but I don't think the conditions changed that much. कि बिल्कुल ही कितने 90 पे आउट हुए थे. I think they were all out for 90, right? And Ashwin took like 9 overs. 91. So I'm really surprised that happened. But honestly, it's a bit like karma. Because पहले टेस्ट में इंडिया भी 36 ऑल आउट हो गई थी, अपनी 91 में हो गई. So I think that rivalry is brewing more. Because वो एक sort of कर्ज बन गया है कि जो विजिटिंग टीम होती है वो जल्दी आउट हो जाती है सेकंड इनिंग्स में. हाँ, तो देखना पड़ेगा क्योंकि कोई बात है कि India did actually come back very strongly in that series. So who knows, Australia would actually have a comeback. वो छोड़ दे आप. वो इतना लंबा इतने रोंदूपन से तो नहीं होने वाला कि इस तरह से वो अभी तो चल के उस पे आते हैं ना. लेट्स टॉक अबाउट द रोंदूपना ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम, जिस बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे कि मतलब पहला जो है प्राइम एग्जांपल उसका, काफी सारे हैं. मतलब एक तो ऑफ कोर्स स्टार्ट भी उन्होंने कहा जी पिच कंडीशंस जो है ना वो ठीक नहीं है. जो मैं बात कर चुका हूँ, मैंने टर्म बताई थी ना, रैंक टर्नर जो टर्म यूज होती है, हाउ रेसिस्ट दैट इज. कि टर्नर आपने कहा जहां बॉल टर्न करे उसको आपने रैंक टर्नर में, क्या हम रैंक सीमर्स कहना शुरू कर दें आपकी पिचेस को? एग्जैक्टली. नहीं, इन लोगों दे No, they should have no position to criticize any pitches. आपने वो देखी जो साउथ अफ्रीका के पहले मैच में जो थी, जो ग्रीन विकेट जो थी, that was जो मुझे बिल्कुल ग्रीन पिच थी गैबा की, बिल्कुल ग्रीन, घास दिख रही थी. अच्छा. So and like उसमें the visiting captain was like कि someone can actually die here. It was like that fast. So and that unpredictable and like वही बात है, 3 दिन में मैच खत्म हो गया. एंड आई मीन दे शुड बी इन नो पोजीशन टू से दैट. एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्पिन इज अ पार्ट ऑफ क्रिकेट वेदर दे लाइक इट और नॉट. उनसे अगर स्पिनर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे उनका मसला है, बट स्पिन इज अ पार्ट ऑफ क्रिकेट एंड समटाइम्स there will be wickets that support spin. That's it. Like I don't know why that's a big deal. I still don't get it. हाँ, बात ये कि चाहे जो भी हो, मतलब आपकी होम टीम has every right by the rules of cricket to make a pitch that suits their team, and that's the whole point, right? Home advantage क्या है आपका? यही है ना कि आप अपनी conditions के मुताबिक, अपने बैट्समैन के मुताबिक, आप strengths के मुताबिक खेल पाते हैं, और that's why it's difficult to win away from home, right? That's the whole point of it. So वही बात है कि पिच अगर उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक बना दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? That's fine, आप सीमिंग ट्रैक्स बनाते हैं, ठीक है, वही बात है. मतलब हर टीम पाकिस्तान की तरह तो नहीं होती ना, जो अपने ही प्लेयर्स डिसएडवांटेजेस के ऊपर जो है वो पिचेस बनाती है. यूजुअली टीमें अपनी डिफेंस को देख के पिचेस बनाती हैं, बट यू नो अब लगता है बुरी आदत पड़ गई है. तो मतलब एक तो ये था. देन ऑफ कोर्स वो लोशन वाले जो हमने बात की थी कि जडेजा की जो है उसने अपनी उंगलियों पे लोशन जो है वो क्यों लगा लिया. उस लोशन वो हमारी बैट्समैन अंधे हो गए, उन्हें बॉल स्पिन करती हुई दिखाई दे रही थी. I realized this just now. So what they were alluding to was the fact कि India reverse swing करने की कोशिश कर रहा है. But if you really think about it, India ने तो अपने फास्ट बॉलर्स खिलाए भी नहीं थे, सारे तो स्पिन से विकेट कर रहे थे. लाइक वो क्यों रिवर्स स्विंग करेंगे? पहली इनिंग्स में शुरू में इनके फास्ट बॉलर्स ने विकेट निकाली थी, which actually was a big surprise कि शुरू में सिराज ने विकेट निकालनी थी और शामी ने विकेट निकालनी थी. Like first 5 wickets में से I think the fast bowlers actually took most of them.
तो Siraj is the next Bumrah. सिराज It's actually, like like उसका सिराज का रिकॉर्ड इज आल्सो फैंटास्टिक, like उसका टेस्ट एवरेज अराउंड 20 के आसपास है, कितनी है उसकी, बहुत जबरदस्त किस्म की है, लेस अभी देन उसकी 20 टेस्ट actually. एवरेज टेस्ट एवरेज ज्यादा है, but when you see him ball you see talent, and I think once he reaches his peak he would be one of the best easily. I mean ODI में तो he's one of the हाँ, best for see, but like test में I think he's still to prove himself. He's सिराज very आई good थिंक, in that. सिराज आई थिंक डेफिनेटली वुड बी अ फ्रंटलाइन बॉलर फॉर देम इन द फ्यूचर. आई थिंक टेस्ट मैचेस में खास तौर पे अवे कंडीशंस में, बिकॉज दे डू नीड बेटर फास्ट बॉलर्स. और वही बात है कि आई थिंक ही इज एन अप एंड कमिंग प्लेयर. काफी I think would be a huge weapon for them, especially going abroad. I don't know England में उस तरीके से, but definitely in the Australian series for sure, जिससे पहले भी उन्होंने किया था, he will play a huge role. And अभी कौन सी बात हो रही थी, I think there was हाँ, वो aggression वाली बात हो रही थी, which is again the रोंदू नहीं पना नहीं कि उससे यार पहले there was हम the DRS. हाँ वो जो DRS DR पे तो था. that हाँ, वो was DRS का दिखा रहे तो रहा होता कि ये बॉल इधर कैसे जा रही है, ये कैसे हो सकता है. उसी ने व्हाट भी दिया उधर उस पे कि जी हाँ, जब आप सैंड पेपर यूज नहीं करते तो बॉल ऐसे ही रिएक्ट करती है. No, but like, see, that's like prime रोंदूपन, because like आप बॉल जब पैड से लग रही है उससे पहले दिख रहा है कि सीधी जा रही है, तो that means आगे भी सीधी ही हाँ जाएगी ना, like टर्न कहाँ से हो जाएगी एकदम से. So बिल्कुल. हाँ, वो भी yeah, था, डीआरएस भी हमारे खिलाफ है, वो वाली रोंदू बना भी उनका था. और ये मुझे बड़ा मजे का लगता है कि जब ऑस्ट्रेलिया वाले हारना शुरू करते हैं, विच रेयरली हैपन, इसी वाली उनका रोंदूपन हमें कम नजर आता है, क्योंकि यूजुअली जीतते रहते हैं 90% ऑफ द टाइम, दे विनिंग राइट. तो जो yeah. 10% जब वो So हारना शुरू होते हैं ना, तो वो एकदम सारा गुबार बाहर आता है, आप हैरान होते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं. देन यू रियलाइज कि yeah, अच्छा हाँ, मतलब है सही, काफी ज्यादा है बल्कि, क्योंकि वो बात जितना हम हारे हैं हम उतना कंप्लेन नहीं करते, लाइक वी रियरली डू इट कंसीडरिंग द हमें तो नंबर आदत ऑफ है. टाइम. हमें तो आदत है ना, हमें कहते हैं ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है. वो बल्कि हम अपने प्लेयर्स को ब्लेम करते थे कि ये दफा ना भी हो रहा, हम अपने प्लेयर यार यही चूती है, इन्हें नहीं खेलना नहीं आता होगा. हम तो इस तरह से कह देते हैं ना, हम तो उनके ऊपर Yeah, डालते yeah, नहीं है. ये मतलब yeah. कहते हैं नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, पिच खराब है, लोशन जो है हमारे खिलाफ गया हुआ है, डीआरएस डीआरएस का डी जो है स्टैंड फॉर दगाबाज. तो उसके साथ मतलब आप हर तरह की चीज आप उसमें डाल देंगे, सिर्फ अपनी टीम को या अपने प्लेयर्स को आप नहीं कहेंगे यार आपने खेलना नहीं आता या इन कंडीशंस के लिए सूटेड नहीं है. आई मीन यू नो, वो वाली चीज वो कब आएगी, क्योंकि एटलीस्ट जो लास्ट चीज है वो जो एग्रेशन की, वो चलो एटलीस्ट प्लेयर्स पे तो आती है ना कि यार आप एग्रेसिवली नहीं खेले. लेकिन क्या करें. I was gonna say कि like racism में एक बहुत common element है कि a lot of the accusations that are made against a certain people are reflections or projections of your own behavior. So ये मैंने actually देखा है कि जब इंडिया विजिट करती थी like places like South Africa या Australia, तो जो टीवी टीम थी they would actually tamper with the DRS. They would show extra bounce in places where it didn't exist. ये चीज़ें करते हैं ये लोग खुद करते हैं अपने, जब ये होम कंडीशंस में यही काम कर रहे होते हैं. We know about sandpaper gate, we know about क्या कहते हैं all of these we know about pitch tampering. So ये सारी चीज़ें ये लोग खुद भी करते हैं. DRS तो we know कि ये लोग tamper करते हैं. So yeah. I mean maybe वो बात है कि वो क्या नाम है अपना, this is like a cricketing version of he who smelt it dealt it वाली बात. कि उन्होंने Yeah. खुद हर जगह पे वो दिखाई दे रहे हैं, अपनी हरकतें जो है ना, वो कहते हैं बेईमान बंदा हर जगह बेईमानी नजर आती है, क्योंकि Yeah. खुद उसका चोर होता है. तो वो वाली बात कि अपने दिल में जो चोर है वो हमें नजर आना शुरू हो गया कि देखें ये हरकत इस तरह भी कर रहे हैं, चीटिंग भी कर रहे हैं. वो तो काफी अरसे से इस तरह से सीजन का चल रहा होता है. जब ये हारते हैं इन कंडीशन में तो फिर वो आगे से इस तरह का रोंदूपना जो है वो शुरू हो जाता है. तो वो बड़ी खुशी हुई. और अभी वो बगीचा बात हुई थी ना कि लगता है ऑस्ट्रेलियंस को कि एग्रेशन जो है वो उनकी घर की खेती है. कोई और करे, जैसे कोहली जो है एग्रेसिव खेलते हुए लगता है जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है ये, या ही इज प्लेइंग लाइक एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर. तो वो अभी भी जिस तरह से उस पर इतराज हो रहा था, आई थिंक यू टेलिंग मी कि स्टीव स्मिथ के ऊपर इतराज कर रहा था. कौन कर रहा था, ग्रेग चैपल कर रहा था, एलन बॉर्डर कर रहा था. वो एलन बॉर्डर ने कहा था कि हम हार इसलिए रहे हैं क्योंकि जो स्टीव स्मिथ ने जब वो बीट हुआ था अश्विन से, उसने जो थम्स अप दिया था ना, वो उसको नहीं देना चाहिए था, उसको एग्रेसिवली रिप्लाई. हाँ बिल्कुल, बेसिकली Yeah. आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर रहा है. हाँ, obviously they're हाँ, doing it for the IPL कॉन्ट्रैक्ट के contract. लिए कर रहा है, इसलिए उसने थम्स अप दिया था. और वो शायद थम्स अप जो उनका ड्रिंक है ना, शायद उसके लिए भी कर रहा है कि यार मुझे वो स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए थम्स अप की तरफ से. इसलिए वो कर रहा था. तो बेसिकली जो इंडियन मनी के लिए ना वो अपनी एग्रेशन को टोन डाउन कर, वो कह रहा है कि नहीं आपने अपने मुल्क के लिए खेलना है, आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना है, ये हरकतें आप बंद करें, आप एग्रेसिवली खेलें.
get in their faces. और फिर ऐसे ही होगा, अगले मैच में आके ना वो शॉटें मारने की कोशिश करेंगे एग्रेसिवली, और फिर वो क्या नाम है 50 पे आउट हुए होंगे, क्योंकि इन कंडीशंस में you don't try to attack, you try to occupy the pitch basically. ये आपने करना होता है. एक चीज जो मैंने देखी है ना इन लाइक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर, आजकल तो एक परसेप्शन बनी हुई है ना कि दे आर वेरी फ्रेंडली एंड दे आर नॉट टॉक्सिक एनीमोर. आई थिंक टू दिस डे दे आर वेरी टॉक्सिक एंड ये लोग शुरू से बहुत टॉक्सिक हैं. आई थिंक वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्रॉब्लम्स सिंस द चैपल्स का एरा जो था वो था कि ऑस्ट्रेलियंस कैन नॉट टेक प्रेशर. लाइक जब ये जीत रहे होते हैं तो ये बहुत अच्छा खेलते हैं, जब ये प्रेशर लेते हैं तो नॉट ओनली आर दे हार्श टू देमसेल्व्स, दे आर हार्श टू अदर प्लेयर्स एज वेल. So like we know about the Australian cricket का जो behavior रहा है, like रिकी पॉन्टिंग का तो well recorded है, जो वो बदतमीजियां करता था on field, वो हार रहा था. But we also like when you watch the test documentary, दोनों सीजन आ चुके हैं, जब भी इनके प्लेयर्स आउट होते हैं या परफॉर्म नहीं कर पाते, ये लोग बहुत जोर से चीखते हैं लाइक लॉकर रूम में जाके, लाइक they're very hard, like they throw shit around and like वो like हम and I know for a fact कि ये दूसरे लॉकर रूम्स में नहीं होता, because I know, मुझे याद है MS शहजाद ने एक दफा किया था कि उसने चीजें फेंकी तो he was banned because this doesn't happen elsewhere. but वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में चीजें तोड़ना, गालियां देना, अगर गलती से आउट हो गए, मतलब चीखना चिल्लाना, they cannot handle pressure situations में they just falter. So वो that's a consistent weakness. उनका जो लॉकर रूम कल्चर है वो ज्यादा टॉक्सिक है. हाँ. I think that is true. I think on pitch the Australian teams have actually been pretty good at facing kind of pressure, at least game pressure जो है वो उसको अच्छा फेस कर लेते हैं. They have historically been a team that performs well under pressure. But I think वो जरूर है कि एक historically इनका बड़ा टॉक्सिक किस्म का कल्चर रहा है. Overall भी I think we've seen like way back जो उनकी डॉक्यूमेंट्री थी अपना वेस्ट इंडीज की फायर इन बैबिलॉन, उस टाइम से लेके ओवरऑल स्पोर्ट्स कल्चर उनका, उनके फैंस से लेके उनकी टीम्स अभी मजाक भी बनाते ग्रेट क्रिकेटर वाले, लाइक दे वर टॉकिंग अबाउट लाइक कोहली स्लेजिंग समवन एंड देन वो उसके ऊपर जो है उन्होंने पूरा कोई एक न्यूज़ सेक्शन बनाया. कहते हैं ऑस्ट्रेलिया पे करते तो वो तो आपकी मल्टी पार्ट सीरीज बन सकती थी अबाउट स्लेजिंग. तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने तो स्लेजिंग को सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट में वही लेके आए थे. They're the ones who kind of started, right? तो वो तो मतलब आप उस टाइम पे देख लें कि जब वो लिटरली वेस्ट इंडीज की प्लेयर्स रोने की हालत उनकी हो गई थी जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, इतना ज्यादा उनको स्लेज किया गया था. तो वो बात है कि दैट्स समथिंग दे हैव बीन डूइंग, और अभी तक उनके सॉर्ट ऑफ कल्चर में चल के आ रहा है. अभी वो एक टॉक्सिसिटी चल रही है उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर भी है, प्लेयर्स के अंदर भी है. दे फील लाइक इट्स फाइन टू बी एग्रेसिव और लाउड, गालियां दें, ये करें. उनको लगता है ये बिल्कुल ठीक है. अब वो थोड़ा बहुत उन्हें टोन डाउन करना पड़ गया होगा, लेकिन अंदर से वो उस चीज को बुरा नहीं मानते. एंड दे फील लाइक दिस इज अ स्ट्रेंथ फॉर देम. इट इज फॉर देम एटलीस्ट इन टर्म्स के दे आर लाइक वो बहुत वायलेंटली कंपैरेटिव है उनकी टीम कंपेयर्ड टू अदर टीम्स व्हिच आर नॉट सो मच, नॉट टू दिस लेवल. Yeah, no, I just wanted to add that I think that's the point. Their weakness is कि ये अपना strength समझते हैं. Because if you go to any sports psychologist, doing this sort of thing when you get out, and like because they're being harsh to themselves, वो अपने आप को गालियां दे रहे होते हैं. And I think उस level की अपनी like इतनी low self esteem रखना while playing, that's not a healthy way to play your cricket. इतना pressure carry करना, like you have to be on some level, you have to be nice to yourself. What I've seen is, at least in my experience, sports के अंदर ना there's a problem with sports inherently. कि sports आपकी ये जो negative traits हैं, they are good in that situation. Like the best, like for example, I also follow football, right? So the best football managers tend to be psychopaths. A lot of the time, they're like extremely psychopathic, very aggressive. Like I supported Manchester United, लेकिन मैं इस चीज को मानता हूँ कि एलेक्स फर्गसन जो है वो एक साइको था. जितना वो एग्रेसिव था, जितना वो गालियां बकता था और लोगों को जैसे मेंटली मैनिपुलेट किया करता था in order to get, you know, I remember उसको पूरा एक वाकया सुनाया था. There was a international player जिसने अपना किस्सा सुनाया था. He's a French player, एकदम ज़हन से नाम उसका निकल गया. But he was telling about the fact कि जी हम मैच खेल रहे थे, and I think he said कि पहले हाफ के एंड पे we were 1-0 up, and he was actually the player who was performing the best in that half. और कहते हैं हाफ एंड होने से पहले दूसरी टीम के ना एकदम सडनली दे हैड लाइक 1 or 2 अपॉर्चुनिटीज, क्लोज कॉल्स हुई, गोल तो नहीं हुआ बट दे केम क्लोज टू स्कोरिंग. तो कहते जैसे हम हाफ के लिए अंदर गए तो मैं तो बड़े सुकून से बैठा हूँ कि यार मुझे तो पता है मैं तो अच्छा खेल के आया हूँ.
और कहते हैं मैनेजर अंदर आया, मैनेजर ने मुझे सुनाना शुरू कर दिया कि तुम क्या कर रहे हो, बकवास प्लेयर, तुम ये और वो, तुम्हें खेलना नहीं आता, तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें उतार दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हें अगली दफा टीम में नहीं रखूंगा। तो मैं हैरान परेशान कि ये क्या हुआ। मैं तो अच्छा खेल रहा था। कहते मैं गया, मैंने और जोर लगाया सेकंड हाफ में, हम 2-0 या 3-0 जीत गए। कहते अगले दिन जो है वो मैनेजर जो है मुझे मिला, तो मैंने कहा जी मैंने आपसे बात करनी है। कहते हाँ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं करते हैं। कहते कमरे में गया, मैंने कहा जी कल क्या हुआ था, मैं तो सबसे अच्छा खेल रहा था और आपने मुझे ये कह दिया। हाँ कहते हाँ मुझे पता तुम अच्छा खेल रहे थे। कहते तुम्हें पता तुम अच्छा खेल रहे तो व्हाई वर यू टॉकिंग लाइक दैट। कहता यार इसलिए क्योंकि मैं नजर आया था टीम ढीली पड़ रही है और सबको नजर आया था यू वर द बेस्ट प्लेयर। मैंने इसलिए जाकर तुम्हें सुनाया क्योंकि उन्हें लगा कि यार जो सबसे अच्छा खेल रहा है अगर उसको मैं ऐसे कर रहा हूँ तो उन्हें तो पता है कि दे वर नॉट प्लेइंग वेल, तो उस वक्त उन्होंने बेहतर खेलना शुरू किया। अब मुझे पता था यू कुड टेक इट। सो वो इस तरह का, एंड ही वुड डू दिस काइंड ऑफ स्टफ ऑल द टाइम। इस तरह से साइकोलॉजिकली ना वो लोगों को मैनिपुलेट किया करता था, एंड दैट्स कंसिडर्ड टू बी अ गुड थिंग, राइट? ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर इन इंग्लिश हिस्ट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम। लेकिन दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन ही वाज अ साइकोपैथ। No, but like I think ultimately that's a white culture because जो क्लब क्रिकेट खेली है उसमें in the smallest mistakes possible they the players around you are very encouraging, बहुत positive mindset promote होता है. I know Asian जो cricket culture है it's much more positive, like I know उसमें भी उसकी toxicity तो masculinity की तरफ जाती है, but like we don't like tend to like apply that sort of pressure on each other कि like वो क्या है यार खेल नहीं रहे सही से, like वो एक some level होता है कि हाँ सही है ड्रॉप हो गया हो जाता है, वो but तो वो बहुत ज्यादा था, बट फुटबॉल कल्चर तो खास तौर पे ना, लाइक इतने साइकोपैथ्स आपको फुटबॉल मैनेजर मिलते थे, बाकायदा लोगों को रुलाते थे, उनके ऊपर मतलब उनको बेइज्जत करना, गालियां देना, पता नहीं क्या क्या कुछ चलता था। दैट वाज लाइक एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक कल्चर, फुटबॉल yeah स्पेसिफिकली, एंड फुटबॉल मोर सो देन अदर्स, टू बी ऑनेस्ट। वहां तो ये बहुत ही ज्यादा होता था, एंड इन अ वे ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ दैट कल्चर, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी सारे वहीं से ही आए थे, इनके फैमिलीज yeah मेजॉरिटी वो इंग्लैंड से ही आई थी yeah to Australia. So maybe there is some connection in that. But yeah, I mean, वो एक मसला इनका अपनी जगह पे है. But yeah, so how do you see the second test match going? Same as before, I think. कोई इतना ज़्यादा chance तो लग नहीं रहा. मुझे लगता है ये है कि I feel I like do it's going to be closer. मतलब at least थोड़ा fight ज़्यादा देंगे ऑस्ट्रेलिया वाले, लेकिन हारेंगे फिर भी. I think maybe I'm seeing like a 4-day defeat. मुझे ये लग रहा है कि ख्वाजा और स्टीव स्मिथ तो खेलेंगे, बस ख्वाजा स्टीव स्मिथ लेबरशेन कभी ना कभी तो रन बनाएंगे, और डेविड वार्नर यू कैन नॉट रियली काउंट आउट डेविड वार्नर, मोस्ट लाइकली ही विल नॉट स्कोर थ्रू आउट द 4 टेस्ट, बट ही इज स्टिल अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, तो यू नेवर नो. So like I do one thing is for sure, ख्वाजा स्टीव स्मिथ और मार्नस लेबरशेन कभी ना कभी तो स्कोर करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो स्कोर ना करें, उनकी टेक्निक उस तरह की नहीं है. So maybe they'll do a lot better, but yeah, I don't see them winning. हाँ And सर. again, another controversial decision in the selection process, they dropped Travis Head, and Travis Head is someone जो I think अच्छा खेल सकता था इंडिया में because he plays at a strike rate of 100 and बहुत aggressive खेलता है, and like he could have put pressure back on the team, but they dropped him. And he also balls off spin, so he would have been an extra spin option. So अगर ये ट्रेविस को खिला दें तो शायद थोड़ा सा डिफरेंस दिख सकता है. हाँ, I think they will have to adjust the combination a bit as well. वो भी इन्हें करना पड़ेगा. That will also make a difference if they're able to find like players who are better suited to these conditions. But yeah, मुझे लगता है कि second में, and this is like a general pattern for most away teams, honestly. Second test match तक वो थोड़ा बहुत used to होके conditions से they actually start performing a bit better. लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी उतनी बुरी तरह से नहीं हारने वाले सेकंड वाले में, लेकिन I don't expect them to win either. And I don't expect them to draw either. So वही बात है कि हारेंगे, लेकिन probably शायद उतनी बुरी तरीके से ना हारें. That's at least what I'm. इनको ड्रॉ की जरूरत बहुत है. अगर ये 4-0 हार गए तो ये तो फाइनल इनका खत्म हो जाएगा. सो दैट मींस एंड दैट वुड बी वेरी सैड बिकॉज इन्होंने पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सीजन बहुत अच्छा खेला है. If they just suddenly lose this one and they don't qualify for the final, and like some team like Sri Lanka is playing India and England, वो तो बहुत बुरी होने so वाली है. bizarre. Yeah. हाँ, So, exactly. पाकिस्तान तो yeah. मतलब अपनी दोनों टांगों में ना यूं करके उन्हें फायर मार रहे थे. ऑस्ट्रेलिया सीरीज, Yeah. न्यूजीलैंड सीरीज, उन्हें तो बहुत अच्छा चांस था पाकिस्तान का. They had an amazing chance, but वही बात है, वो हम सीरीज देख नहीं पाएंगे. That actually would have been interesting if पाकिस्तान इंडिया की होती तो. Although हमारे साथ बहुत बुरी I होनी think थी. अगर
क्योंकि टेस्ट मैच में we can't really compete with the Indian team. Short format में yes, I think we can, but I don't think we can do all that well in the test format. One thing is for sure though, अगर क्या कहते हैं, if for some reason Australia qualify नहीं करती for the World Test Championship, I think this will be the final season of the World Test Championship because I think ये experiment काम नहीं कर रहा. ये this idea of like a free flowing, आप अपनी मर्जी से fixtures बनाएं and like फिर उसके हिसाब से करें, उससे आपको वो फाइनल्स में वो अच्छी टीमें आपको दिख नहीं रही, या वो आपको एक satisfying conclusion नहीं दिख रही. Like in this case, Pakistan should have been a finalist, Australia should have been a finalist, South Africa should have been the finalist. India तो हो जाएगी finalist, वो तो पक्का है. But like मतलब का एक वो होता है फॉर्मेट, आप कहते हैं कि जी एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो या टीम्स जो है बड़ी टीमें आपस में आए, उनका आपस में मुकाबला हो एंड यू गेट लाइक अ मैच एट द एंड. वो वाली चीज नहीं हुई. इवन लाइक जब न्यूजीलैंड वाले जीते भी थे, न्यूजीलैंड आर अ डिसेंट टीम, बट आई डोंट थिंक एनीवन कुड से कि दे वर बेटर देन इंडिया. They won. They should have been. अच्छा एक और चीज, they should have 3 matches for the final. हाँ, उसमें तो एक मैच. Yeah. So again that doesn't make any sense कि यहाँ पे इतनी लंबी सीरीज अभी हो रही है, फाइनल के लिए आपने सिर्फ एक मैच रखा हुआ, वन ऑफ, which again against the whole test format वाली चीज. क्योंकि टेस्ट में तो वही ना, आप देखें लॉन्ग फॉर्म में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कौन सी टीम जो है अपने आप को प्रूव करेगी कि which are better. So that again is like a one shot thing. So बहरहाल चलें ठीक है, let's conclude this and let's talk again next time जब second test match होता है and hopefully फिर से कुत्तों वाली होने वाली ऑस्ट्रेलिया के साथ. It's fun to watch though. Like वो domino effect नहीं था, like end में जो मैं देख रहा था ना कि वो, मैं पहली इनिंग की बात कर रहा हूँ, सेकंड इनिंग तो मैंने देखी भी नहीं, मुझे तो लग रहा था अभी बैटिंग करेंगे ये लोग. मैंने तो ये वो क्रिक इन्फो पे देखा था कि वो क्या हुआ है. बट पहली में जब हाँ 5वीं विकेट जब गिरी, तो 5वीं विकेट के बाद डोमिनोज गिर रहे थे, हर बॉल पे आउट हो रहे थे ये लोग. सो या तो चलें ठीक है. Okay, I'll see you soon and we'll see all of you soon as well. Bye.